Good morning, students. Hope you understand the behavior of individual, interpersonal behavior, how they interact in a group, and all. Now, when you interact in a group or you work in a group, sometimes there is a human relation problem that arises, like conflict. Now, in this unit, we are going to cover what exactly conflict is and how to manage that conflict for your betterment. Now, what is conflict? Basically, conflict is the struggle between incompatible or opposing needs, wish, ideas, interest, or a pupil. Conflict arises when individual or a group encounter goal that both parties cannot obtain satisfactorily. Basically, conflict is a disagreement. It's a disagreement between the two parties, or you can say in organizational contact. If we talk, conflict may be understood as a process in which one party perceives that another party has taken or will to take action that are incompatible with one's own interest. अंडरस्टैंड मीन्स जब आप दो पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है या लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट को के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है यू आर योर discomfort you are facing, then means it is a conflict. Conflict is a process that begins when one party perceives that another party has a negative effect, negatively affected, or is about to negatively affect समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी कैरीज अबाउट. जब आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव होने वाला है या नेगेटिव हो चुका है, तब आप कहते हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. यू परसीव दैट, यू फील दैट. ओके. एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट नेसेसरली बी रिजॉल्व्ड. सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको मालूम है कि रिजॉल्व नहीं हो सकते, बट लर्न हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट कैन डिक्रीज द ऑड्स ऑफ नॉन प्रोडक्टिव एक्सप्लेनेशन. मीन्स अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. यू मेक दैम प्रोडक्टिव. एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्वायरिंग स्किल related to conflict resolution, self awareness about the conflict modes, conflict communication skill, and establish a structure for management of a conflict in your environment. Okay, so all members in every organization need to have a way of keeping conflict to a minimum. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिनिमम रखना है एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम कॉज बाय कॉन्फ्लिक्ट बिफोर कॉन्फ्लिक्ट बिकम अ मेजर ऑब्स्टिकल टू योर वर्क. उसको पहले ही रिजॉल्व कर लेना कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके. दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. The basic nature of the conflict. Conflict arises because of incompatibility of two or more aspects of an element. It may be a goal, interest, working environment, anything. If you are incompatible with anything, it means the conflict arises. Conflict occurs when an individual is not able to choose among available courses of action. आपने देखा होगा we have alternatives, and when we are confused which alternative is best for us, then at that time also conflict arises, and it is a dynamic process as it indicates series of events. Okay, and conflict must be perceived expressed by the parties. Conflict कब माना जाएगा? When it is perceived and it is expressed by the parties. Okay, because these two things in an organization, in a feature, if you talk about features in another way, there is a universal process. You found conflict everywhere. It is a conscious and deliberate effort. Conflict is a personal and direct. It's an individual process. It is a process that loaded with impulsiveness of human emotions,
and all. It may be latent and overt. Latent form means the tension, dissatisfaction among you, and overt means which declare in a hostile action. जब आपके सामने दिखने लग जाए कोई चीज़, then it is a overt conflict. And latent means जब आप feel कर रहे हैं, आपके अंदर है discomfort, and it is cumulative. ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगर आपने इसको सही टाइम पे एड्रेस नहीं किया. And previously in conflict may cooperative to achieve a goal consider important enough for them to unite despite their differences. ठीक है. Sometimes conflict have a positive aspect also. It make the people cooperative against the outside party, and it may emerge as a result of opposing interest. Clear what exactly the conflict is? There is a difference between a conflict and a competition. Competition does not involve direct action by one party to interfere with the activities of the other. Competition में क्या है कि आप दूसरे की एक्टिविटी में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रहे. But in case of conflict, one party tries to prevent and to inhibit the success of the other. आप यहाँ ट्राई कर रहे हैं, आप दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं. Then it become a conflict. For example, track event. ओके, ट्रैक इवेंट्स होता है इन अ कंपटीशन वेयर रनर्स आर रनिंग. जो रनर्स रन कर रहे हैं वो क्या किसी दूसरे के ट्रैक में आते नहीं आते. दे रन फास्टर बट डू नॉट अलाउ टू इंटरफेयर विद ईच अदर. देन इट इज़ अ कंपटीशन. बट फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इन्वॉल्व बोथ. कंपटीशन भी है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है. दोनों ही चीज़ें वहाँ पर है. यू आर कमिंग इन बिटवीन द ट्रैक. You are doing your job also there. Okay, now the human relation view of the conflict. In human relation view, the belief that conflict is a natural and inevitable outcome in any group. Because human relation है, conflict natural है आपका, कि ये आपका जो है कभी ना कभी आपको डिससेटिस्फैक्शन होता ही होता है आपके ग्रुप में जब आप काम कर रहे हो, और ये रिवील भी होता है. एंड इंटरेक्शनलिस्ट व्यू है कि दे बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट दैट इट इज़ ऑल्सो एन एब्सोल्यूटली नेसेसिटी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली. ये क्या मान के चल रहे हैं इंटरेक्शनलिस्ट कि कॉन्फ्लिक्ट जो है पॉजिटिव फोर्स भी है, साथ ही साथ आपके ग्रुप में परफॉर्म करने के लिए, ग्रुप अच्छा काम कर सके, इफेक्टिवली काम कर सके, इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना भी चाहिए. इट मोटिवेट्स यू, इट ब्रिंग यू यूनाइटेड व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज, बट इट शुड बी मैनेजेबल लिमिट. नाउ देयर इज अ ट्रेडिशनल एंड current view regarding the conflict. Traditionally, a conflict is avoidable. वो मानते थे, ट्रेडिशनल व्यू में जो है ये माना जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं. एंड कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज बाय मैनेजमेंट एरर एंड इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन और बाय ट्रबल मेकर्स. मीन्स आपके जो और कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट जो है आपके जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, कि जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया है. एंड कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिवेंट द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. इसकी वजह से आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट काम नहीं कर पा रहे. एंड द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट. हमारा मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर सके, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज अवॉइडेबल अकॉर्डिंग टू देम. एंड ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिक्वायर द रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Means they believe that all conflict is harmful and must be avoided. This is the traditional view related to conflict. But nowadays, the views have changed. Conflict is unavoidable. Because we are working in a group, we have a human relation.
एंड ह्यूमन हमेशा हर चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अनअवॉइडेबल. आपका कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है. एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम मैनी कॉजेज. It is not only because of the organized management error. It may be organization structure, unavoidable differences in the goal, differences in the perception, values of a specialized personnel, and so on. There are n number of reasons that create a dissatisfaction among the employees. And conflict contribute and reduce organization performance in varying degree. कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है और उसको रिड्यूस भी कर सकता है, बट द डिग्री इज डिफरेंट. द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैनेज द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन फॉर ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. तो यहाँ मैनेजमेंट का काम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को एक लेवल तक मैनेज करना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे लिए फंक्शनल भी है. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द परफॉर्मेंस. सो उतना कॉन्फ्लिक्ट रहे जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम हो सके, बट नॉट बियॉन्ड दैट. उससे पहले आपको उसका रिजोल्यूशन देना है. तो ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिक्वायर अ मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर. ट्रेडिशनल व्यू और करंट व्यू में कितना डिफरेंस है. ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए, इट इज़ अवॉइडेबल, it doesn't create any positive sense for the organization. But current view said no, it is unavoidable, and we have to manage that conflict up to the optimum level. It should not increase beyond that particular level. Clear. Now, the types of conflict. There are n number of types, like functional conflict, which is known as you can say constructive conflict or a positive conflict, which shows the positive aspect of the conflict. आपने देखा होगा बेटा कि जब बाहर से कोई कंपटीशन आता है या कोई प्रॉब्लम आती है घर में, चाहे कितने डिफरेंसेस सब एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिलकर उसको फाइट करते हैं. तो ये क्या है? इट्स अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द conflict. The same will happen in the organization. Then dysfunctional conflict, which is a negative conflict, which is not bring anything concrete. Then intrapersonal conflict, then interpersonal conflict, then intra-group conflict, then intergroup conflict. So these are the various types of the conflict. In another class, we will discuss in detail the types of conflict. Okay. Now, if we talk about in the terms of aspect of the conflict, we have functional and dysfunctional conflict. And if we discuss this in the level of conflict, then in individual level, we have two type of conflict: intrapersonal and interpersonal conflict. In group level, we have again two type: intergroup and intragroup conflict. And then organizational level conflict. Okay, students, if you have any problem, then please call me. Thank you, students, for today.